कल 7 मई को पूरे देश में बजेगा युद्ध का सायरन। तैयार रहिए डिब्रूगढ़ वासियों। डिब्रूगढ़ में भी कल 7 तारीख को कोयलोड में शाम 4 बजे युद्ध के बचाव की तैयारी की जाएगी। युद्ध के समय सुरक्षित रहने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। फाइनल एक्शन शुरू हो गया है। आप सभी को मालूम है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध होने की स्थिति जैसी पैदा हो गई है और इस स्थिति में कभी भी दोनों पक्षों में भारत और पाकिस्तान में युद्ध होने की संभावना जग चुकी है। ऐसे में बचाव बहुत ही ज़रूरी है और बचाव को लेकर सरकार, केंद्र सरकार पूरी तरह से तैयार होना चाहती है। आप सभी भी अपने इस बचाव कार्य में अपने आप को बचाने के लिए प्रशिक्षण लेकर तैयार। सिविल डिफेन्सर टीम और गोटे जिসকল DDM লগত জড়িত বিভাগ আছে ইমার্জেন্সি রেসপন্সর কাৰণে তেওঁলোক সকলোকে লগত লৈ কাইলৈ আমাৰ মক ড্ৰিল এটা হ'ব। আমি ডিব্ৰুগড় হেডকোৱাৰ্টাৰতে কৰিম। সো উই হেভ আইডেন্টিফাইড এ লোকেশ্যন। ডিব্ৰুগড় টাউনত আমি এটা মক ড্ৰিল কৰিম। কালি 4 PM হ'ব এজ পাৰ ডিৰেকশ্যন ফ্ৰম মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম। সো সাবজিকুৱেণ্টলি যেনেকৈ আমাৰ ডিৰেকশ্যন আহে সেইমতে আমাৰ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰি থকা হ'ব। বাট টুমৰো ফাৰ্ষ্ট এফৰ্ট হিচাপে আমি কালি 4টা বজাৰ পৰা চিভিল ডিফেন্স প্লাছ অল আদাৰ যিমান ইছেঞ্চিয়েল ছাৰ্ভিচেছ আছে ইনক্লুডিং মেডিকেল ছাৰ্ভিচেছ, এম্বুলেঞ্চেছ, ফায়াৰ ছাৰ্ভিচেছ গোটেইখিনি সকলো কম্বাইন হয় এটা আমি জইণ্ট এফৰ্ট এটা কৰিম। কাইলৈ কৰা নহ'ব। আমি কাইলৈৰ কাৰণে এটা ছিংগল লোকেশ্যনত কৰিম। তাৰপিছত শ্ল'লি আমি এজ পাৰ ডিৰেকশ্যন যেনেকৈ আমাক ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা নিৰ্দেশনা দিব তেনেকৈ আমি কৰি থাকিম।